Cool. MCP course. Whoa, whoa, whoa. From beginner to informed. It won't make you an expert, it will make you informed. Foundational unit hands on. Application. Use cases. Assignments. Collaborations. Latest MCP implementation. It's a living project. Onboarding, fundamentals, use case, deployed use case, bonus units. What is the recommended pace? 1 month. How do we get the most out of this course? Join something, join groups, test, stay in sync, ban button shaw. For the bug, I still have questions. Understand what is MCP, why it's important, concepts, integration challenges, key benefits, example. Limited by यहाँ पे ऐसा अभी भी ये नहीं है क्या कॉपी लिंक टू हाईलाइट मार्क नहीं कर सकते क्या अपन या उसका कोई और एक एक्सटेंशन वगैरह आता है इनको तो देना चाहिए ना क्या बोलते हैं उसको रे हाइलाइटर हाईलाइटर बोले वेब मार्कअप्स एंड हाइलाइटर्स कैट फीचर्ड है 4000 प्लस यूजर्स रेटिंग उतनी खास नहीं है और ये स्टोर कहाँ करता है वो भी maybe one refresh would do. There's however these models are doing lack of real-time information. Highlight. Once you do login. Oh my god. रहने दे भाई लोकल वोकल करता तो ठीक है एक और ऐप में मैं लॉगिन नहीं कर सकता अभी ठीक है तो एक मिनट उसको हटा ही देते हैं So the models are limited by the training data, lack of access to real-time info, and specialized tools. This limitation hinders potential of AI system to be accurate. Blah blah blah. This is where MCP comes in. Enables AI models to connect with external data sources, tools, and environments. Right. This is what I was saying yesterday. This is kind of similar thing that agents and reg systems were trying to help LLMs with. So MCP enables AI models to connect with external data sources, tools, and environments, allowing for the seamless transfer of information capabilities between this. Overview: what is MCP, key concepts, and blah blah blah. Okay, let's start. Before diving into it, is important to understand key concepts. MCP is described as the USB-C for AI application. So the integration problem, the M into N integration problem, refers to the challenge of connecting M different AI applications to N different external tools
or data sources without a standardized approach, without MCP. This is the eminent problem. Without protocol like MCP, developers would create custom integrations. Customer one for each possible pairing of an AI application with an external. Each AI application would need to. So they are saying AI application and they are saying model, and you're using that word interchangeably. AI application need not be same as model, right? Each application The application is the larger thing, model is part of the application. application may not be even be like like model can be लाइक हम जब कंपनी में डेवलप करते थे वो ए एप्लीकेशन करते थे, लेकिन हम एलएलएम तो नहीं करते थे. हम एलएलएम को थ्रू एपीआई ओपन एआई का एलएलएम को यूज़ करते थे, एंड देन Hmm. आवर एप्लीकेशन बिकेम एन एआई एप्लीकेशन. अदरवाइज इट वुड हैव सिंपल एप्लीकेशन. It Correct. became an AI application because we consumed OpenAI's LLM model, Mhm. right? So what is confusing is M into N. ये जो एरोस आ रहे हैं वो मॉडल के थ्रू आने की बातें हो रही है या एआई एप्लीकेशन में आने के थ्रू बातें हो रही है? This whole thing is the AI application, the larger box. बिकॉज एआई सिंपल एप्लीकेशन अगर है तो ये प्रॉब्लम आज भी हम लोग सॉल्व करते ही है. डेटाबेस फाइल सिस्टम कैलकुलेटर Hmm. without the AI part, just a web application. If it was just a web application, we still have these concerns, right? Of course, it does not have AI wala aspect to it, but an application needs to talk to a database, an application needs to talk to a file system, an application, and it has been doing that for years and years now. Now with AI application, also you would want to do that, but एप्लीकेशन में तुम कॉन्शियसली वो फ्लो लिखते थे हाथ से, या कोडर वुड हैव रिटर्न ऑल दैट, ये कि हाँ डेटाबेस में कनेक्ट करके ये एसक्यूएल क्वेरी चलाओ, ये एपीआई आएगा तो ये करो, तो वो मैन्युअली लिखना पड़ता था. दैट वुड हैव thousands and thousands of lines of code doing able to do that. With AI application you don't specifically program for anything. यू जस्ट से कि डेटाबेस ये है, उसका स्कीमा ये है. मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कौन सी क्वेरी चलानी है, जो कि प्रोग्रामर एआई एप्लीकेशन ना होते सिंपल एप्लीकेशन होता, जो कि हमारा ब्रेड एंड बटर है, जो हम करते हैं डे टू डे बेसिस पे. डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं वहाँ पे कि हाँ एपीआई मान लो स्लैश बुक्स है, तो स्लैश बुक्स पे कॉल आया तो क्या करना है, पहले डेटाबेस को करो, उसमें ये क्वेरी मारो, उसमें से ये रिजल्ट आए, ये फिल्टर करो, ये सब हम कोड करते हैं, राइट? सो माई गेस इज नाउ इन एआई एप्लीकेशन you wouldn't specifically write that. You would just say कि हाँ ये डेटाबेस है, इसमें बुक्स का रिलेटेड ये सब यहाँ स्कीमा है, तुम देख लो भाई, कोई कुछ क्या पूछेगा तो तुम समझ लो क्या करना है, क्या क्वेरी करना है, तुम ही जब मार लो और तुम ही उसका डेटा आंसर दे दो, इस टाइप से. सो बट या मे बी लेट्स से कि दिस इज एन एप्लीकेशन प्लस मॉडल सब मिला के ये है, बट एटलीस्ट दे शुड हैव बीन कंसिस्टेंट विद द टर्मिनोलॉजी इज माय पॉइंट. One each possible pairing of an AI application with an external capability. Each AI application would need to integrate with individually. This is a very complex, expensive process. Blah blah blah. Once we have multiple models and multiple tools, the number of integration becomes too large. With M plus C application, you have this. There's an interface introduced of an MCP, and so it becomes an M plus N problem. So this is M, this is N. So this becomes this. Okay. Which you have to deal with the client side of the MCP once. Okay. That is because they are the ones requesting a service or whatever else that it needs to carry out its task, and the server would be the one providing the service, in which case database file system calculator will provide its respective services. And this is the protocol, I'm guessing, right? So now that we understand the problem MCP solved, let's dive deep into core MCP standard like HTTP or USB-C. It's a protocol for connecting your application to external tools. Therefore, using the is crucial to making this. When documenting our application, communicate this with component MCP client to host. MCP has a client and a server, right? So MCP, the AI application is a client, the tools is a server.
Host, a user facing AI application that end user interacts with directly. Example includes Anthropic's Cloud Desktop, AI enhanced IDEs like Cursor, inference libraries like Hugging Face, Python SDK, right? Like the pipeline and all those things that we have been using so far. That would also Mhm. constitute a host that we have been doing all this while on Google Colab, or custom application built in libraries like LangChain or Small Agents. Hosts initiate connection to MCP servers and orchestrate the overall flow between user requests, LLM processing, and external tools. Client, a component within the host application that manages communication with a specific MCP server. Each client maintains one-to-one connection with a single server. And in protocol level details of MCP permission acting as an intermediary between host's logic and external server. So it's an external protocol service that exposes capabilities. And it could be tools, resources, or prompts via the MCP protocol. Capabilities, of course, your application's value is the sum of the capabilities it offers. So the capabilities are the most important part of your application. Connect with any software service, but there are some common capabilities that are used for many AI applications. So the capability can be a tool that can be executed, resources, prompts, and sampling. Executable functions that the AI model can invoke to perform an action, retrieve computer data, typically relating to user tool. For weather application might be a function that returns weather in a specific location. So read data sources that provide context without significant computation. This can be a knowledge base or PDFs and things like that, I think. Predefined templates or workflows that guide interaction between users, AI, a summarization prompt. Sampling, a server initiated requests for the client host to perform LLM interaction, enabling recursive actions where LLM can review generated content and make further decisions. A writing application reviewing its own output and decides to refine it further. In this case, it is the other way around. Server initiated requests for client and host to perform an LLM interaction. So there's a tool can be a code interpreter, a resource can be a software documentation, prompt can be a code style prompt. Conclusion, understanding this key concept. ठीक है, इसमें तो कुछ ये नहीं है, right? Move to the next one. Yeah. Architecture components. Hosts, client, and server. So you have clients. You can have multiple clients, each client connecting to a unique server, and a server has capabilities. It can be tools, prompts, or resources. Three primary components: hosts, client, and server. We touched on these in the previous section, but let's dive deep. Host is a user-facing AI application, AI chat app like ChatGPT, Anthropic's Cloud, AI Cursor, AI agents, and applications built in libraries like Small Agent. क्या है continued dev, amplified developers, AI meeting development, see it in action. ये देखा है क्या? You know what this is? Continue dev? Huh? No. So ये भी cursor tech पे है. Tab to auto.
जैसा ही लग रहा है, मुझे लगा कुछ और है क्या। प्रोमो वीडियो लगा दो। यही तो गिटअप को पायलट और कर्सर वर्सर सब यही सब करते थे। आई थॉट कि उसने कर्सर के यहाँ लिखा, लेकिन फिर अलग से उसको मेंशन दिया है इंटीग्रेशन टूल्स लाइक ये, तो मुझे लगा कुछ और कर रहा है। Hosts' responsibilities include managing user interaction and permissions, initiating connection to MCP servers via MCP clients, orchestrating the overall flow between user requests, LLM processing, and external tools, rendering results back to user in coherent format. In most cases, user will select their host application based on their needs and preferences. For example, a developer may choose Cursor for its powerful code editing capabilities, while domain experts may use custom applications within its knowledge. It's a component within a host application that manages communication with server, one-to-one connection with single server, handles protocol level details with MCP communication, acts as an intermediary between host logic and external server. Is an external program service that exposes capabilities to AI models using MCP protocol in servers. Provide specific access with blah. So this is a typical workflow. User interaction. User interacts with the host application expressing an intent or query. Host processes user's input, potentially using an LLM to understand the request and determine which external capabilities might be needed. Host directs client command to connect to the appropriate server. The client queries the server to discover what capabilities it offers. Capability information based on user's need or LLM's determination. The host instructs to invoke specific server. The server executes requested functionality and returns result to client. The client relays. The key advantage of this architecture is modularity. A single host can connect to multiple servers simultaneously via different clients. New servers can be added to the ecosystem without requiring changes to the existing. It might appear simple, but its power lies in the standardization of communication protocol. This interaction patterns are guided by several key principles. Standardization, simplicity, safety, extensible interoperability. Okay. Nothing new, right? As such. वही जो वहाँ बताया था वही. Just go back up little bit. एक बार फ्लो में थोड़ा ऊपर जा. That diagram with the MCP. In this case, where is the LLM? So that is what I was saying, right? The LLM itself is actually a model, and this may just be an application, an AI application. Now, AI application could basically talk to LLM, right? So to this host is nothing but a AI application like we wrote the other day, right? और जो हमने ग्रेडियो पे इंस्टॉल किया, जब हमने ग्रेडियो पे डाला, उसको बोला कि एक सेंटेंस दो, है ना? तो उसने सेंटेंस लिया. हगिंग फेस पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे स्पेसेस में जाऊंगा. These are all your applications. These are all AI application. है ना? यहाँ पे वो बोला तुम यहाँ पे टेक्स्ट लिखो, हेलो हाउ आर यू, ये तुमने ये लिया, तो ये यूज़र का इंटेंट है, ये यूज़र का क्वेरी है. और मैं जब जनरेट बोलता हूँ, मैंने क्वेरी पुश किया इस एप्लीकेशन को. तो एप्लीकेशन एक चीज़ है और इंटरनली वो एक मॉडल यूज़ भी कर रहा है. तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो उसको. रियली तो वो हो सकता है मॉडल कहीं से यूज़ कर रहा हो, एपीआई कॉल करके मॉडल यूज़ कर रहा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मॉडल इसी में इंटीग्रेटेड हो, कि एक्चुअली उसने मॉडल सीरियलाइज करके इसी में हो. तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, इसलिए मैंने बोला ठीक है, फिर दोनों वैसे डिस्टिंग्विश कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते.
तो इट कैन बी ईदर ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन आई सपोज कि होस्ट में मॉडल हो भी सकता है, होस्ट के बाहर भी हो सकता है। तो बट ओवरऑल होस्ट एक एप्लीकेशन है, एआई एप्लीकेशन, जिस पे यूज़र अपना क्वेरी सबमिट करेगा। उसमें एलएलएम होगा नहीं होगा, बट जो भी है वो क्वेरी हो सकता है होस्ट खुद से ही क्वेरी को डिसाइड करके ही फाइंड आउट करे और अपने क्लाइंट को बोले कि सर्वर के पास ये करके जाना, या फिर पहले एलएलएम को पूछे और एलएलएम बताए कि नहीं ये पूरे तरीके से आंसर करने के लिए मुझे एक टूल चलाना पड़ेगा, और ये जब आए तब क्लाइंट सर्वर से कॉल करके टूल को ये करना पड़े। तो यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि based on the user's need or LLM's determination, the host instructs the client to invoke specific capabilities from the server. Right? So either of these cases कि मैं host खुद ही user की query देख के ये करे, मतलब इतना सिंपल यूजर क्वेरी है कि 2 + what is 2 + 2 कर रहा है, तो वो एलएलएम के पास ना जाते हुए मे बी सर्वर को डायरेक्टली पूछे। बट आई गेस इन जनरल सेंस द एलएलएम इज द ब्रेन विच प्लान्स एंड एवरीथिंग, कि मुझे आउटपुट देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो मेरा रीजनिंग वगैरह वो है, प्लस मुझे एक्चुअली एक्सटर्नल टूल्स चलाने पड़ेंगे कि अगर उसको कोई क्वेरी आया कि इज इट अ गुड टाइम टू गो टू पेरिस दिस वीकेंड, तो वो जनरली अपने जुलाई के हिसाब से तो वो फाइंड आउट करेगा कि क्या महीना है, बट वो शायद ये भी जानना चाहेगा कि इस जुलाई में स्पेसिफिकली इस वीकेंड को क्या टेम्परेचर है। तो वो चाहेगा मे बी वेदर टूल इन्वोक करे पूरी तरीके से आंसर देने से पहले, तो वो क्लाइंट को बोले कि हाँ ये वेदर टूल से ये इस वीकेंड का भी डेटा लेके आओ, तो मैं एक पूरा समराइज करके ये भेजूंगा टाइप से। Okay. Makes sense. What is the primary purpose of MCP? To enable AI models to connect with external data sources, tools, and environments to replace problem Yes. What problem does MCP primarily solves? The lack of AI models, high cost, Third. and plus difficulty in new AI algorithm. Which of the following is a key benefit? Increased complexity, standardization, and interoperability in the AI ecosystem, and isolation of AI models, for example. In MCP terminology, it's a host. It's a UI, user-facing AI application. What does M into N integration problem refer to? Difficulty of training, challenge of connecting M AI application to N external tools without a standard. The communication protocol. Standardization, JSON, RPC, the foundation, client and server. So now we are into the protocol itself, right? MCP uses this as the message format for all communication between clients and servers. JSON RPC is a lightweight remote procedure call protocol encoded in JSON, which makes it human readable, language agnostic, and well established. Request response, request notification. So क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे ये रिस्पॉन्स भेज सकता है, या असिंक्रोनसली क्लाइंट खुद से एक नोटिफिकेशन भी भेज सकता है। The protocol defines 3 types of messages: request sent from client to server to initiate an operation. Request message includes a unique ID, method name to invoke, tool/call, and parameters for the method, if any. Example request. This is the protocol identifier. This is the message identifier, unique identifier. This is the method name. And this tools.call, it can be resources.view or something. These are the parameters. Whether, so it's probably the name of the tool. Arguments. Responses sent from server to client in reply to a request. It includes the same ID as the corresponding request. And either a result for success or failure. Result, temperature is 62, partly cloudy. Result and error, invalid location parameter. One-way message that don't require a response, typically sent from server to client to provide updates or notification about events. Processing data, percentage 50. Okay. प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए वगैरह नोटिफिकेशन बीच बीच में आते रह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, JSON RPC defines a message format, but MCP also specifies how these messages are transported. Two main transport mechanisms are STDIO. This is, I guess, if they are on the same machine. The host application launches server in the
as a sub process communicates with it by writing it to standard IN and standard IO, simple no network configuration, or it can be HTTP/SSE or streamable HTTP. It is for remote communication with clients on different machines, communication with SSE to push updates to the client over a persistent connection. The main advantage of streamable HTTP, which offers more flexibility by allowing servers to dynamically upgrade to SSD streams when needed, while maintaining compatibility with serverless environment. Actualized in the previous section. So the client connects to the server and they exchange protocol versions and capabilities, and the server responds with its supported protocol and version capabilities. Initialized response initialized. The client confirms the initialization is complete via notification. So discovery phase, the client requests information about available capabilities and the server responds with a list of available tools. Says if you meet tools list, it responds. This process could be fetched for tools, resource, or prompt type. Execution, the client invokes capability based on the host's need. Tools.call. This is an optional thing, but it responds to the original requests. And the termination phase, the connection is gradually closed when no longer needed, and the server acknowledges the shutdown response. Evolution. Extensible, adaptable, the initialization. क्या बोल रहा है वो? MCP protocol is designed to be extensible and adaptable. The initialization phase includes version negotiation, allowing for backward compatibility as the protocol evolves. Additional capability discovery enables client to adapt to the specific features such as offers, enabling a mix of basic and advanced services. MCP server expresses a variety of capabilities for communication. Let's explore this core primitive tools. Executable functions or actions that AI model can invoke through MCP protocol control. Tools are typically model controlled, meaning that the AI model or the LLM decides when to call them based on the user's request and context. User ability to perform actions with side effects. Ability to perform actions with side effects. Tools execution can be dangerous, therefore that typically requires explicit user approval. And the security aspect. Use cases: sending messages, creating tickets, querying APIs, performing calculations, and etc. A weather tool that fetches current weather data for a given location. Get weather. Connect to the weather API and this, and you actually get nothing. Resource provides read-only access to data sources, allowing a model to retrieve context without executing complex logic. To retrieve context without executing complex logic. Resources are application controlled. These are typically invoked by models. This is by the application. Meaning the host application typically decides when to access them. This is sort of like a RAG. They are designed for data retrieval with minimal computation, similar to GET endpoints and REST APIs. Since they are read-only, they typically present lower security risks than tools. Accessing file contents, retrieving database records, reading configuration information. Example of this: read file. Forms are predefined templates of workflows that guide the interaction between user, AI model, and the server's capability. Forms are user controlled, often presented as options in the host application's UI. They structure interaction for optimal use of available. Users typically select a prompt before the AI model begin processing.
code review, generate a code review for the snippet. So you are a code reviewer examining, let's say, C++ code. Provide a detailed review highlighting best practices, potential users, issues and suggestions for the system prompt, and then you have a user prompt. Please review this C++ code, C++, and then code. This is a prompt which was available on the server, but user controls them, and from the UI, user okay. Sampling allows servers to request the clients specific the host application to perform LLM interaction. This enables server-driven agentic behaviors and potentially recursive or multi-step applications like tools and typically requires approval. The server might request the client to analyze the data it has processed. The sampling flow follows these steps. Servers and sampling create can modify samples from an LLM. Client reviews the completion and instrument loop design. So they may work in a complementary way. A user might select a prompt to start a specialized workflow. The prompt might include contextual resources during processing the AI, might call tools. For complex operations, server might use something to request a rational and process. So one of MCP's key features is dynamic capability discovery. When a client connects to a server, it can query available tools resources. So let me say tools list, resource list, or problem ki list de de. This allows clients to adapt to the specific capability the server offers without requiring hardcore knowledge of the server's functionality. Understanding these core primitives is essential for working with them. इस पे कुछ है डिस्कशन करना कि बढ़ते आगे. So basically on the server side also you could have an LLM. So you are saying that it will give you a set of prompts which will work on it at some point. The server can also be an LLM, driven by an LLM. Server doesn't have an LLM. नहीं तो नीचे जा. What does this mean? Discovery process mean one of MCP's key, when a clients connect to a server, it can query available tools, resources, and prompts. So which means the server can tell the client what is a good prompt. No, sir. Now the prompt is for who? For the server or for the client to use internally with its like in the host wherever the LLM is running. So this is an example of a prompt, right? This is an example of a prompt, but this is a prompt which is hosted on the server, just like tools are hosted on the server, just like resources are hosted on a server. So for instance, this is one of the tool, right? Of course, the tool here is nothing but a Python function which given a location gives you its temperature and
like weather related details, and to get this it might actually call some weather API वगैरह. But Mm-hmm. this this Python function exists as a tool on a server. Mm-hmm. Similarly, there can be file PDFs database, this thing जिसमें पूरे कंपनी का Resources. डेटा पड़ा है, resources, वो Mm. uh, ये रिसोर्सेस है. Mm. वैसे ही प्रॉम्प्ट्स है कहीं पड़े हुए. Mm. जैसे कोड रिव्यू का प्रॉम्प्ट तो ये है, तुम्हें किसी के प्रूफ रीडिंग करना है, कोई न्यूज़पेपर है तो उसका एक अलग प्रॉम्प्ट होगा, या जैसे भी प्रॉम्प्ट, राइट. हाइकू लिखने वाला प्रॉम्प्ट, ये लिखने वाला कैजुअल प्रॉम्प्ट, ये वाला. तो ऐसे अलग अलग से प्रॉम्प्ट भी पड़े हुए हैं, वो भी सर्वर के पास पड़े हैं. नहीं, बट ये प्रॉम्प्ट टू बी यूज्ड वेयर? जब बताता हूँ ना. और सैम्पलिंग में तो कुछ भी नहीं है. सैम्पलिंग तो वो बोल रहा है कि मुझे अगर क्लाइंट को सैम्पलिंग पे आते हैं, बट मान लो ये 3 चीज़ें पड़ी हैं, तो ये जो कोड रिक्वेस्ट, पहले तो ये है, ये मेरे एप्लीकेशन को कैसे पता है? तो इसलिए पता है क्योंकि मैंने ये कॉल मारा. हाँ. क्लाइंट और होस्ट में इंटरचेंजेबली यूज करता हूँ, क्योंकि क्लाइंट होस्ट में ही है. होस्ट मतलब एआई करेक्ट, एप्लीकेशन, करेक्ट. या. राइट. और एआई एप्लीकेशन वो चीज़ है जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है. Mm-hmm. मतलब उसके पास एक यूआई है वगैरह वगैरह. तो उस Correct. यूआई में वो बोल रहा है कि मुझे प्रॉम्प्ट दिखेंगे कि जो मेरा इंटेंट है करने का. जैसे मुझे अभी among all other things that say it wants to do code review, Mm. राइट. फॉर इंस्टेंस मेरा एक यूआई आ गया. ये एक यहाँ पे मान लो यूआई है, ये यूआई है जहाँ पे मैंने मेरे एप्लीकेशन पे लॉगिन किया, और यहाँ पे मान ले मुझे 2-4 चीज़ें मिल रही है. जैसे कोड रिव्यू है, राइट मी अ पोएम है, या Mm. ऐसे 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं. तो उसमें से मैंने अगर ये सिलेक्ट किया, पहला वाला सिलेक्ट किया, ये अगर मैंने सिलेक्ट किया मेरे यूआई पे, होस्ट एप्लीकेशन पे, मतलब मुझे ये प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट मिल गया. ये प्रॉम्प्ट मुझे बाय डिफॉल्ट मिल गया जब मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया यूआई पे. ये जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, मान लो, तो यूआई पे मैंने मेरा यूआई यूएक्स एक्सपीरियंस ऐसे लिखा है. ये जैसे ही सिलेक्ट किया, ये क्योंकि तुमने कोड रिव्यू पे किया, तो बोला तुम्हारा कोड डाल दो यहाँ पे, जो तुम्हें रिव्यू करवाना है वो तुम्हारा कोड यहाँ पे डाल दो. तो उसने हेलो वर्ल्ड का एक कोड लिखा था, जो वो चाहता है कि ये एप्लीकेशन, ये होस्ट एप्लीकेशन मुझे रिव्यू करके दे दे कि मैंने सही से कोड लिखा है कि नहीं, है ना. तो वो कोड उसने डाल दिया. अब जब उसने सबमिट बोला कि हाँ रिव्यू करके बटन पे क्लिक किया, Mm. हाँ, ये रिव्यू करके बटन पे क्लिक किया, तो बेसिकली ये कोड यहाँ पे चला जाएगा. और यहाँ पे मान लो कि वो उसने कोड रिव्यू में लैंग्वेजेस भी थे कि किस लैंग्वेज का करेगा, उसने वो भी सिलेक्ट किया. तो उसने पाइथन सिलेक्ट किया था उसने, और उसने बोला ठीक है नाउ पेस्ट योर कोड. तो ये आया, तो ये लैंग्वेज में वहाँ पे पाइथन चला जाएगा. अब ये होस्ट डाल रहा है, ये जो टेम्पलेट में फिलर्स है वो होस्ट डाल रहा है, बट ये प्रॉम्प्ट इन इटसेल्फ मुझे सर्वर से आया था. ये प्रॉम्प्ट इन इटसेल्फ मुझे सर्वर से आया था. जब ये कब आया, जब होस्ट एप्लीकेशन अप आ रहा था पहली बार, जब मैं अप कर रहा था होस्ट एप्लीकेशन को, तो उसने अपने क्लाइंट से इस सर्वर को कॉल मारे और बोले कि तुम्हारे पास जो भी प्रॉम्प्ट है वो डाल दो, दे दो मुझे. तो उसके जब भी प्रॉम्प्ट आए थे, कोड रिव्यू का प्रॉम्प्ट आया था, पोएम का प्रॉम्प्ट आया था, वगैरह वगैरह सब प्रॉम्प्ट आया था, तो उसने अपने अपने यूआई बटन के साथ उनको एसोसिएट करके रखा था कि जैसे उस पर वो कोड रिव्यू पे मारेगा, तो मैं बाकी एक वर्कफ्लो उससे पूछूंगा कि लैंग्वेज सिलेक्ट करो, एक्चुअल कोड दे दो, ताकि उसके जो टेम्पलेटाइज्ड ये है उन पे मैं वो चीज़ डालूंगा जब यूज़र का इंटेंट क्लियर होगा. तो यहाँ पे लैंग्वेजेस में वो सबको पाइथन डालेगा, कोड में वो एक्चुअली ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रॉब्लम डालेगा, और फिर ये सबमिट पे ये पूरा प्रॉम्प्ट अभी ये एलएलएम को चला जाएगा. Which is at the host. Which is at the host, or it host may be calling हाँ, someplace वो else. उसमें But भी yeah, at the calling. host you can हाँ. say at the host. अब LLM Now अब the LLM question ये is, करेगा. हाँ, हाँ, बोल. हाँ, तो LLM क्या कर सकता है? LLM सिंथेटिकली देख सकता है कि हाँ ये सब सही दिख रहा है. तो one possibility is LLM might say okay all good, and then it gets returned to the user saying all good. Or else for a complicated thing LLM might just say कि ये verifiable चीज़ है. जैसे मैथ का अगर प्रॉब्लम होता तो वेरीफाइबल टूल से वो वेरीफाई कर सकता था, या सिंथेटिकली सही दिख रहा है लेकिन लेट मी रन दिस. ओके, इन दैट केस इट मे चूज टू से tool.call and a Python interpreter.
ओके, Hmm. सिंथेटिकली सब सही दिख रहा है, बट लेट मी बी श्योर, लेट मी जस्ट कॉल अ टूल विच कैन एग्जीक्यूट दिस कोड रियली। तो Mm-hmm. वो होस्ट एप्लीकेशन को बताएगा। इस टाइम पे वो एलएलएम इसको भी बोलेगा कि हाँ, क्लाइंट और एलएलएम के बीच में, होस्ट और एलएलएम के बीच में ये होगा कि मेरे पास जो भी कैपेबिलिटीज तुम्हारे पास आई थी, तो उसको ये पता है कि टूल्स लिस्ट में एक कोड इंटरप्रेटर भी है तुम्हारे पास। तो एलएलएम Hmm. उसको बोलेगा कि वो टूल कॉल में से पाइथन वाले को कॉल मारो, पाइथन इंटरप्रेटर को कॉल मारो, और इसके आर्ग्यूमेंट में बेसिकली यहाँ पे उसने कहीं दिया था ना, लास्ट इसमें दिया था वो कहीं, तो कहाँ दिया था उसने, वो जो कॉल वाला और आर्ग्यूमेंट वाला एक था ना, हाँ ये राइट। तो इस केस में इसके पास आएगा टूल्स डॉट कॉल, पैरम्स में वेदर की जगह पे वही पाइथन इंटरप्रेटर वगैरह आएगा, और आर्ग्यूमेंट में लोकेशन की जगह पे यहाँ पे पूरा कोड आ जाएगा, और ये कॉल इसको चला जाएगा, क्लाइंट के थ्रू सर्वर के पास चला जाएगा, सर्वर इसमें इंटरप्रेटर से ये करके उसको पास करेगा, एलएलएम को देगा। अब एलएलएम देगा, ठीक है सिंथेटिकली मुझे सही दिख रहा था, वो कोड इंटरप्रेटर ने भी सही दिखा, अब वो बोला है सही है, और होस्ट को बोलेगा, होस्ट फिर एक्चुअल यूजर को वापस बोलेगा ऑल लुक्स गुड या जो भी गलती है, राइट। बट टू योर पॉइंट, ये जो प्रॉम्प्ट था, वो प्रॉम्प्ट सर्वर ने इस हिसाब से लाके रखा है कि वो जॉब इजी कर देगा, ये ताकि फिर हर क्लाइंट को अपना अपना ये सब अलग ना लिखना पड़े, काम वो इस तरह से एलएलएम को करके आसान करके दे रहे। अल्टीमेटली ये काम किसके आ रहा है, देखा जाए तो ये काम किसके आ रहा है, काम तो आ रहा है एलएलएम के, आई थिंक दैट वाज व्हाई योर क्वेश्चन वाज कि क्या ये डायरेक्ट एलएलएम से बात कर रहा है क्या, बट आई थिंक ये प्रॉम्प्ट प्रेजेंट करने का काम फिर भी होस्ट कर रहा है, बट होस्ट के पास तब आया जब उसने लिस्ट मांगी उससे, इससे जब लिस्ट मांगी प्रॉम्प्ट डॉट लिस्ट करके, जब सर्वर से लिस्ट मांगी तो होस्ट के पास ये लिस्ट आई, बट ये प्रॉम्प्ट सर्वर ने रखा था, इस हिसाब से रखा था कि अल्टीमेटली ये एलएलएम के पास ही जाएगा, और एलएलएम को फिर क्योंकि उनको रोल और वो सब करना पड़ता है, तो वो आसानी हो उसके लिए। So how does the this code know हाँ, what LLM is running on the other side? व्हाट क्या, Because what kind of LLM is running on the other side? Maybe Gemini is running this prompt will work well, but if something else is running, then maybe we need another prompt. तो वो भी एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है टू द सर्वर सेइंग कि आई एम रनिंग सो एंड सो LLM, तो उसके हिसाब से मुझे प्रॉम्प्ट भिजवा। इज दैट फेयर टू से? मे भी कस्टम तरीके से किया जा सकता है, आई डोंट नो, बट आई गेस ऐसा, मतलब तुम यहाँ पे जैसे यहाँ पे उसने ये दिखाया था राइट कि ये जैसे वेदर, कनेक्ट टू वेदर एपीआई एंड फेच डेटा, है ना, तो इस केस में बेसिकली यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉजिक लगा रहा है, इस केस में सिंपल लॉजिक है, एपीआई कॉल करो और डेटा लेके आओ। हो सकता है यहाँ पे तुम, और ये सर्वर साइड पे है राइट, ये सर्वर साइड का टूल करेक्ट, है, करेक्ट। यहाँ पे हो सकता है तुम चाहो तो कुछ कस्टम लिख सकते हो, हाँ कि इफ दिस देन प्रोवाइड दिस प्रॉम्प्ट, इफ दैट देन प्रोवाइड दैट प्रॉम्प्ट, काइंड ऑफ अ थिंग, इट इज पॉसिबल आई गेस। The prompt itself may not be ideal for all LLMs. It would be different for different LLMs. राइट, और जितना भी बातें चलती है एमसीपी की, वो जितना मैं सुन रहा हूँ, इट्स मोस्टली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईदर टूल्स और रिसोर्सेज। Hmm. Okay, the model MCP provides official SDK for both JavaScript, Python, other language. This makes it easy to implement any application here. Alright, so SDK will handle all the nitty-gritties of client-server communication. These SDKs handle the low-level protocol detail, allowing you to focus on building application capabilities. SDK would be both. SDKs provide core functionality following MCP's protocol specification we discussed earlier. Protocol level
communication capability registration discovery. ये देखते हैं अपन. These are the SDKs. Go में नहीं है क्या? ठीक है, यही चलाते हैं फिर. Hi, I'm Ben, and welcome to this short video on how to create an MCP server in the Python MCP client. In front of us, we have a script that defines an MCP server for a weather service. First, it imports the fast MCP class, then it instantiates that class and gives it a name, weather service. It's important that we give our MCP servers names and descriptions because they're going to be used by large language models, which will need those descriptions to understand what that service does. Next, we have 3 Python functions, which are wrapped in methods from the MCP class. Those methods are tool, resource, and prompt. And each of those functions implements one of those entities. So for example, the first one is a tool to get the weather. The second is a resource that returns some kind of weather resource. The third is a prompt that returns a weather report. In the case of each function, the name of the function is used by the method to create that tool's name, and the docstring is used to create that tool's description. Below that, you would want to implement the business logic for that respective tool. Here, we've just returned a string as a kind of hello world example so that we can understand how it works. We do the same for the resource and prompt. Finally, we need to run the MCP server, which we do using the mcp.run method, and we define the transport type as SSE and the port as 3001. Right, so that's our server script. Now let's run it. We'll need to do some dependency management, and I'm going to create a UV project to do that. So if you're not familiar with UV, it's just a library for doing dependency management in Python. It's pretty fast and it's really handy. So we've initialized a UV project, and I'm going to create a UV virtual environment. I'm going to activate that virtual environment, which I do using the command that the UV returns to me. My IDE asks me if I also want to activate that virtual environment, and I say yes. So now I'm using my Python environment. I need to install some dependencies. I'm going to use pip to do that. And the only dependency I need is MCP, but I need a specific group of MCP dependencies, namely for the CLI. I have to wrap those in quotations because I've used a group. And UV will get away and resolve those dependencies. Okay, so UV's resolved the dependencies, so now I have a Python environment which has MCP in. I need to use the dev command to run a dev server, and I pass to that command the path of my server, which in this case is server.py. I hit return, it begins to run, and it will return an address to an inspector. I open the inspector in my browser, and on the left I see the transport type, the command for that I've run, and I can also explore the environment variables in my server and the configuration of my server. Mostly I'll connect to it, and it will take a second to do that. On the left, I'll just see some logs. Here I've got a warning relating to my virtual environment, but I don't need to pay attention to that. At the top, I can see the resources, prompts, and tools. And if I go to tools, I should be able to list the tool and see the get weather tool, which I defined earlier. You'll notice that, as I said, the function's name is used as the tool's name, and the docstring is used as the tool's description. So when the LLM comes to use this server, it will see that information and know what the tool does and how to use it if you write that in the description. I can also see the same for prompts and for resources. I can explore the history of interactions, and I can just send a basic ping to the server to see if it's running. If I go back to my IDE, I'll see that all those messages here are logged in the command line from my interactions. Okay, so we've defined an MCP server in the Python SDK, we've connected to it with the inspector, and we've had a quick look at the inspector. Next steps might be to
build a MCP server with some real business logic for a use case that you want to tackle or for something that you find cool. What's a UV? यार इनके हमेशा प्रॉब्लम ये इतना 15 स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, हर एक को अपना कुछ चलाना है. क्या है कमांड यूवी का? which has MCP in. I need to use the dev command to run a dev server, and I pass to that dependencies. Okay, in quotations because I've used a group, and the only dependency I need is virtual environment, and I say yes. So now I'm using my Python environment. I need to install some dependencies. I'm going to use pip to do that, and the only dependency
क्या बात है। अरे क्या रिसोर्सेज देखना है। अरे यार ये कुछ टूल्स दिखना है, टूल्स। हाँ मैंने टूल्स रिसोर्सेज नहीं था क्या? गेट वेदर आया, रिसोर्स भी एक डिफाइन किया था उसने। टूल ही ज़्यादा। वेदर रिपोर्ट आ रहा है, टूल्स आया। थिंक कोड देखना पड़ेगा कुछ तो उसने टूल्स एमसीपी। डोंट टेल मी कि उसको कोई सर्वर डॉट यही नाम चाहिए इसलिए मर रहा है। पता तो नहीं चाहिए बट विल स्टिल ट्राई, नेवर नो। प्रोसेस टाइप सर्वर 558 कुछ तो एरर तो आ रहा है। एरर आउटपुट फ्रॉम एमसीपी सर्वर 558 तो लाइन नहीं नंबर नहीं है, बट पता नहीं उसके अंदर से कहीं तो फट रहा होगा वो। बट हाँ बाकी के दो आ रहे प्रॉम्प्ट्स देन टूल्स गेट वेदर, वेदर रिपोर्ट और गेट वेदर तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। सॉरी क्या नहीं आ रहा था, रिसोर्स नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा है। That because what is this weather slash something something. यानी कि चला सकते हैं क्या उसको, रन टू लोकेशन मुंबई, so weather in Mumbai is this. Select a prompt from the list. Run to it. Goa. Get prompt. User text. You are a weather reporter. Weather reporter for Goa. Question mark. Right. So this is, I think, kind of like uh, right. In this case, I think it is us who are just selecting this tool and asking it to run, which the client connects to server and asks it to run this particular tool. But in the real application, it is the LLM that would probably Hmm. make it run, right? And user will just say, okay, user will have more higher level sort of an user query saying, is it a good time to visit Mumbai? And then it may look at the traffic thing, it may look at weather thing, and consolidated करके कुछ एक ये बताएगा. Yep. What is the main purpose of the, ये हो गया ना, ये बचा था उसमें कुछ. बाकी लैंग्वेजेस ठीक है, ये सब ठीक है. लेट्स गो टू द एमसीपी. ठीक है. Main purpose of MCP SDK is to define MCP protocol specification to make it easy to implement MCP servers for visual interface. Which of the following will guarantee to the SDKs handle message according to provider type, which company maintains the official Python SDK for MCP? अभी क्या पता भाई, एंथ्रोपिक MCP उससे आया था तो. What command is used
to start a development server. The role of JSON RPC 2.0 in MCP. It's a primary transport. It's a message format communication. The clients now. After a basic understanding of MCP, we can explore the essential role of the MCP client in the model context. Let's start by exploring the user interface clients. The chat interface client. ये क्या है? Anthropix Cloud Desktop. करें क्या डाउनलोड? Cloudy. Exit cookie. Okay, started. Continue with Google. Google में टाइम करने के लिए इतना टाइम लग रहा है इसको. The cursors MCP client will only enable the about coding assessment to
से देते हैं इसको? MCP. क्या पता भाई, इंटीग्रेशन में क्या था? कहाँ था इंटीग्रेशन? ये नीचे नीचे GitHub ये पे तुम्हारा MCP हो गया ना बेसिकली. If it's connecting to GitHub, let's say, and that is like it can see your repos and do whatever through a server which is hosted by GitHub. no. कनेक्ट हो गया क्या? कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं तो ऐसे डूब. Now that you are connected, what can you do with it? Timer hero. What's in my timer hero? GitHub. So what integration have I done with you? ठीक है, बढ़ते हैं आगे. वो पता नहीं, हो सकता है कहीं और से करना हो तो. So there's an mcp.json file which tells you a list of servers that you can connect to. This is a configuration of stdio transport. It's probably in the same file. There's a server, it's a list of servers. It says name, server name, tkt, again stdio, transport configurations. Okay, the transport stdio, file explorer command can be okay. The file explorer server लोकल है इसलिए stdio है, और python path to file explorer full script. Configuring HTTP plus SSE. Environment variable in configuration. Environment variables can be passed to the server setting using env field. Here's how to access them in your server code. खतरों से हंस के खेलना तो हमें हिम्मत है. The corresponding configuration MCP is like this. There's GitHub API, GitHub token. राइट, ये सब देना पड़ेगा तभी जाके वो GitHub से करेगा. राइट, और ये सब फाइल उसको देनी पड़ेगी जैसे वो यहाँ पे कह रहा है. This is the basic structure of mcp.json can be passed to applications like cloud test. वो कहाँ पास करना है वो पता नहीं, बट वरना वो कैसे ही बात करेगा मेरे GitHub से जस्ट बिकॉज यूजर नेम से करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं. Configuration example. Let's look at some real world configuration scenarios. Local server configuration. In this scenario, we have a local server. There is a Python script. Local server. So it's a Python script.
which could be a file explorer or a code editor. The remote configuration is a weather API. Proper configuration is actually simplifying aspects. You can create and how to publish your own servers. There are tiny agent clients. Now let's explore how to use MCP clients within code. You can also use tiny agents as MCP clients to connect to from your code. Tiny agents. कहाँ करे, लोकल करे कि ग्लोबल करे, वहीं पे करते हैं क्या, इसी में कर दो। नहीं उसमें तो से भाजी हो गई उस ये सब किया. Maybe this because I need to connect MCP servers there. क्या यही प्यार है? एक बार नहीं आता, नहीं याद आएगा. Right. MCP. और मैं कहाँ हूँ? यहाँ पे करते हैं. इसका नाम क्या देना है? agent.json. Okay. So I've done all this. I've done this. It is going to be using data MCP server. तो कौन सा यूज़ करें? ये यूज़ करें. हालांकि उसका नाम तो दिया नहीं है भाई. क्या कर रहा है? मॉडल वॉडल क्या नाम आ रहा है? ये सब क्या था?
तक तो ये बता रहा था कि मुझे भी करो anyway, let's run this and see what happens. Yeah. In the video below, we run the agent and ask it to open a new tab in the browser. The following example shows a web browsing agent configured to use this model via Nebius Inference Provider, and it comes equipped which lets it use a web browser. The agent config is loaded, specifying its path. When you run the agent, you'll see it load, listing the tools it has discovered from its connected MCP servers, and then it's waiting for your prompt used in this demo. Do a web search for Hugging Face inference providers on Brave Search and open the first result, and then give me the list of inference providers supported. Agent loaded with 25 tools. ये सारे tools आए उसके पास. Web browsing agent configured to use this model and it comes equipped with which lets it use a web browser. The agent config is loaded. When you run the agent, you'll see it load, listing the tools it has discovered. Then it is ready for your prompt. Okay, तो ये prompt को डाल देता. Do a web search for HF inference. Web browser dot. ये देखो भाई क्या क्या कर रहा है मेरे कंप्यूटर पे आके. फटाक लगी, लेकिन कुछ कुछ तो किया उसने. ब्रेव सर्च ओपन किया उसने. उसके आगे नहीं कर पाया. क्या इशू हो गया? हमारा विंडोज ही है ना? On the Brave search homepage, let's perform the search for HF inference providers. I'll locate the search box and type it in the query. Failed to process the request in terms of error. Chapa. Wow. This is क्या कर रहा भाई? उसका तो गायब ही हो गया होगा.
Do a web search on, बताओ. How to make an agent? How to make an agent? साइन इन एजेंट क्लोज तो नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया ये जा समझ में नहीं आएगा इसको देख के. आई गेस एक्स्ट्रा डेटा. क्या क्या कर रहा है भाई ये? मानना पड़ेगा कुछ कुछ तो किया उसने. ये सब निकाला. डू अ वेब सर्वर. स्टार्ट बाय ओपनिंग अ न्यू टैब. नेविगेटिंग टू गूगल. टूल. चैट कंप्लीशन टूल. ब्राउजर टैब न्यू. तो उसने इसमें से एक टूल यूज किया. It's an argument. This tool, this is that part of the protocol, I think, between this MCP protocol. And it's a ran playwright code. And the playwright, I think, was the server. Is the green part from the server? Playwright to interview. Code to open new tab. Open tabs. Blank आया. फिर उसने Google टाइप किया शायद. Current tab. Page snapshot. Generic. About. Store. Gmail. Images. Like sign in. Search. This is about. So it looks like. उसने हाँ लिंक उसने आइडेंटिफाई किया. अबाउट स्टोर को आइडेंटिफाई कर रहा है. जेनेरिक जीमेल. गूगल ऐप साइन इन. तो उसने स्क्रैप किया उसका HTML और वो सब निकाला. गूगल ऑफर्ड इन. Feeling lucky. Canada. Generic dialogue. Signing to get the ये. It seems that ये उसने पूरा शायद वापस LLM को दिया. LLM is thinking. It seems that signing dialogue has appeared. I'll close it so we can proceed with the search. After that, I'll find the search input field and type in the query how to make an agent. Browser handle dialog. So that sign in dialog आया था. This is the dialog box. The first thing it wants to do is handle this dialog box and where it failed basically, or probably the server failed. I don't know who failed. Except false करने के लिए बोला था उसने. Text ये. खाद ऐसा है. डक डक गो आता है क्या? डक 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 डक
ये लॉगिन नहीं बोलता क्या अभी? ओके, लेट्स आस्क द सेम क्वेरी. ये भाई कुछ तो किया उसने. क्या बात. हो गया क्या? कर दिया उसने सर्च. So the hitch was some login prompt was coming up which it was not able to resolve. Now go to the first result भी बोलना चाहिए ना, वो भी कर लेगा क्या? हैं? Go to the first result. मतलब सर्च रिजल्ट्स पेज है. ये उसने रिजल्ट्स लेके कुछ वो इसी में कॉपी पेस्ट कर रहा था. भाई उसने तो ये सब तो HTML से उसने सारा कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर निकाला था. उसी HTML से उसने दूसरा भी निकाला. अभी तुम्हें बताओ, बोल रहा है कि कुछ लिंक चाहिए. तो तुमने अगर ऐसा बोला होता कि पहले लिंक पे भी जाओ, पहले हाँ. फर्स्ट 3 लिंक को समराइज करो वगैरह वगैरह, तो वो भी करता वो. इसमें तो हमने उसको ऐसे बोला था. then we can try summarize the results from the top. Can you say copy file from this folder to that folder? I don't think वो उसके टूल्स में था. But let's see. Like वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना सर्वर में. हाँ, उसमें था कि नहीं? जितना मैंने देखा वो ब्राउजर रिलेटेड था कुछ. ये तो ब्राउजर टूल था. जो अपन ने और जो भी run टूल्स किए. होंगे ना, हाँ, फोल्डर वो रिलेटेड. दूसरा MCP सर्वर होना. फाइल देखना सिस्टम. पड़ेगा अपने को फाइल सर्वर. जो अपन ने ये सर्वर निकाला ना, ये जो सर्वर यूज किया है प्लेराइट MCP, उसमें ब्राउजर रिलेटेड टूल्स थे. बट हाँ, बाकी के अपने को देखने पड़ेंगे कैसे कौन से सर्वर यूज कर सकते हैं. So whoever is hosting this server, Hugging Face, Playwright, MCP, whatever it is, they are essentially getting to see your screen, or no? So I It's just think their code is coming here. नहीं. एक मिनट आई थिंक ये जो टाइनी एजेंट है, राइट, ये जो हमने रन किया, वो बेसिकली सर्वर और क्लाइंट दोनों लोकली रन कर रहा है. सो दिस इज नॉट समवन रिमोटली ट्राइंग टू controlling my browser through their tools. So how did that server come to you? This way, by where I did this. This will allow us to run client MCP server and clients ये locally. ये मैं अगर हटा दूँ तो वो नहीं चलेगा. Right, and the way I think the reason why this is, if you see, this is an STDIO, which means this is a local server पे चल रहा है. वो अगर
नहीं होता तो अलग आ जाता. Right. For instance, we'll see. दूसरा नाम क्या था? SSC था शायद उसका नाम. फाइल को अगर मैं SSC बोलूँ तो क्या होता है देख लेते हैं. राइट, वही अगर मैं इसको यो, आज मुझे जाना पड़ेगा जल्दी. बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो इन्वेस्ट टाइम हो चुका है. Okay, we'll just stop the streaming for now and then we'll continue tomorrow from where we left.